Good afternoon, class. Hello. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। Afternoon. Afternoon. जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है? जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट था उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? ये सर एक बार उसको बता देते। अच्छा, कौन सा पॉइंट बाबू? कौन सा पॉइंट बताएं? ये बताओ कौन सा पॉइंट? तुम नहीं आए थे लास्ट क्लास में? आए थे सर। तो उससे कहाँ पर दिक्कत है ये पूछो ना। कैमरा ऑन करके बात करो, कैमरा ऑन कर लो फिर बात करो। हाँ, कहाँ पर दिक्कत है ये पूछो। लास्ट में जो के हमको बताने में कुछ नहीं है, तुम बात समझो। नहीं तो फिर हम एक ही चीज को दोबारा पढ़ाएंगे तो फिर से पूरा क्लास निकल जाएगा मेरा उसी चीज को बताने में, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो तुम स्पेसिफिक होके पूछो कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, ये पॉइंट आप मुझे बताइए। सर लास्ट में एक स्टार मार्क देके लिखवाए थे। द पॉइंट्स वेयर द अबव टू कंडीशन आर सैटिस्फाइड एट द सेम टाइम द फर्म इज इन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट को थोड़ा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, क्या हुआ जो हम लोगों ने लिखा, दो कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था? एम आर इज इक्वल टू एम सी, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। दूसरा क्या था कि मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रहा होगा जब वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट करेगा। मैं थोड़ा सा अगर आपके साथ शेयर कर दूं, तुम लोगों को अगर याद होगा कि मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व अगर याद होगा तो इस तरीके का था, ऐसे। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व पहले क्या हो रहा है? फॉल कर रहा है, पहले फॉल कर रहा है, मिनिमम पे आया और फिर ऊपर की ओर राइज किया। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? पहला कंडीशन जो सेटिस्फाई होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और दूसरा क्या कह रहा है कि जब ये दोनों पॉइंट, जब एम आर इजिकल टू एम सी होगा, वो कब होगा? जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल नहीं कर रहा होगा, जब मार्जिनल कॉस्ट नीचे से ऊपर की ओर राइज करेगा, राइज करते हुए उसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो जहां पे पहला कंडीशन और प्लस दूसरा कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई हो, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फर्म का इक्विलिब्रियम। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे फर्म अपने लिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही है। एम आई क्लियर? यस सर। एम आई क्लियर क्लास? ठीक है, अब हम लोग बढ़ सकते हैं आगे। यस सर। ठीक है, आगे एक हेडिंग दे दो, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन market may be classified into, markets may be classified into the following types, may be classified into the following types। हाइफन दे दो, हाइफन के बाद लिखिएगा नंबर वन, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। नंबर टू, मोनोपोली, मोनोपोली। और नंबर थ्री, imperfect competition, imperfect competition, imperfect competition। तो कंपटीशन के आधार पे मार्केट को कितने हिस्सों में बांटा गया बाबू? कंपटीशन के आधार पे मार्केट को 3 हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के आधार पे मार्केट में एक सेलर दूसरे सेलर से कॉम्पीट करता है कि भाई हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, मेरा प्रोडक्ट तुमसे ज्यादा बेहतर है, हम ज्यादा कस्टमर तक पहुंचेंगे। यस और नो? तो इस कंपटीशन के आधार पे पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को आप 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली और तीसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की। जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिख लीजिए। आज हम लोग सिर्फ लिखने का काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग इसको पढ़ के आएंगे फिर मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा। एक हेडिंग दे दीजिएगा, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन।
लिखिए, perfect competition is a hypothetical 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 TICAL hypothetical form of market. hypothetical form of market. hypothetical का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, इमेजिनरी. ठीक है, ये एक इमेजिनरी फॉर्म ऑफ मार्केट है, ये काल्पनिक फॉर्म ऑफ मार्केट है, हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मार्केट. फुल स्टॉप मत देना, कॉमा देके लिखना. दैट इज it does not exist, that is it does not exist in real life, that is it does not exist in real life, full stop. Following are some of the important features of a perfectly competitive market. Features of a perfectly competitive market. हाइफन दे दीजिए, पॉइंट नंबर ए लिखिएगा या 1 2 3 करके लिखिएगा. पहला पॉइंट, large number of buyers and sellers. Large number of buyers and sellers. Large number of buyers and sellers. हाइफन देके लिखो. The number of buyers and sellers. The number of buyers and sellers is so big that no individual buyer or seller is in a position to affect the market conditions on its own, on its own. देखो इसका मतलब क्या हुआ? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. परफेक्ट कंपटीशन में बायर और सेलर की संख्या इतनी बड़ी है कि कोई एक अकेला बायर, एक अकेला सेलर मार्केट को प्रभावित नहीं कर सकता. किसी एक के रहने से, किसी एक के जाने से मार्केट की स्थिति प्रभावित नहीं हो सकती. तो इसको हम लोग कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. पॉइंट नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट, HOMOGENEOUS. होमोजीनियस प्रोडक्ट. हाइफन देके लिखिए. The products of all the firms are same. That is there is no difference. There is no difference in respect of color, shape, size, etc. of the product. Full stop. The product of one seller ब्रैकेट में फर्म, ब्रैकेट क्लोज, is a perfect substitute
for the product of another seller. Perfect substitute for the product of another seller. मतलब क्या हुआ इसका? होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया? आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस, मतलब अगर एक ग्लास ऑफ पानी में आप एक चम्मच चीनी अच्छे से मिला दें, तो आप जो शुरू का एक चम्मच लेंगे उसकी मिठास और जो आखिरी का एक चम्मच लेंगे उसकी मिठास, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, समान। हाँ समान, कोई अंतर ना हो, न शेप में, कलर में, साइज में, टेस्ट में, नेचर में कोई अंतर ना हो। मतलब अगर मान लीजिए मैं और आप, ठीक है, उस मार्केट में है, तो मेरा प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट दोनों में कोई फर्क ही नहीं। हर सेलर का प्रोडक्ट ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जो एक दूसरे का है। ग्राहक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो हमसे खरीदे या आप में से किसी एक से खरीदे। क्यों? क्योंकि हम में से हर का प्रोडक्ट समान है, कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया? एकदम वैसा ही सब्स्टिट्यूट, एकदम वैसा ही, कोई अंतर, समानता इतनी ज्यादा है कि अगर सारे फर्म के प्रोडक्ट को एक जगह मिला दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए और कहा जाए कि भाई आप अपने अपने प्रोडक्ट की पहचान कर लीजिए, तो आप अपने प्रोडक्ट की पहचान नहीं कर सकते, समानता इतनी ज्यादा है। पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, EXIT, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। There is no restriction, there is no restriction on either the entry or the exit of the firm, or the exit of the firm. If a new firm, who's talking about, if a new firm feels like making an entry into the market, feels like making an entry into the market and making profit, comma, it is free to do so. It is free to do so. Full stop. Similarly, if any of the existing firm, feels like, if any of the existing firm feels like leaving the market, comma, it can do so. समझ में आया? फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। अगर आप बाहर बैठे हैं, आपको लगता है भैया इस मार्केट में बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, आप मार्केट में आइए, एंट्री ले लीजिए, अपने आप को स्टैब्लिश कीजिए, धंधा कीजिए, प्रॉफिट कमाइए। आपको किसी से परमिशन, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं। उसी तरीके से अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म है, अगर वो ये चाहता है कि भाई अब हम प्रॉफिट कमाने की स्थिति में नहीं है, इसमें मेरा कोई गुजारा नहीं होगा, मुझे मेरा सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो मार्केट छोड़ के भी जा सकता है। उसके मार्केट छोड़ के जाने पे भी किसी प्रकार का कोई दबाव या किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट जो स्टार मार्क दे के लिखिएगा, स्टार मार्क दे दीजिए और लिखिए, स्टार मार्क दे के लिखिएगा, if a market has
only, if a market has only the above three features, if a market has only the above three features, comma, it will be known as pure competition, pure PURE, pure competition. It will be known as pure competition. इसका मतलब क्या हुआ? जिस मार्केट में केवल ये तीन फीचर हो, 1, 2 और 3, केवल ये तीन फीचर, कोई चौथा पांचवा छठा नहीं, केवल ये तीन फीचर हो, क्या क्या? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, और क्या है आखिरी में? फ्री एंट्री और एग्जिट। केवल ये तीन फीचर जिस मार्केट में हो उसको हम लोग कहेंगे प्योर कंपटीशन। ठीक है, अब लिखिए चौथा फीचर लिखिएगा, परफेक्ट नॉलेज। फोर्थ फीचर इज परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज, हाइफन देके लिखिए। all the parties in a perfectly competitive market, have all the information about other parties, there is, full stop के बाद, there is nothing to be disclosed, to anyone about anybody। देखिए इसका मतलब क्या हो गया? परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि जितने भी पार्टीज हैं, बायर हो, सेलर हो, इंटरमीडियरी हो, कोई भी हो, सबको सबके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। किसी को किसी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, उसको मेरे बारे में पता नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं। एक बायर को दूसरे बायर के बारे में मालूम है, एक बायर को दूसरे सेलर के बारे में मालूम है, एक सेलर को दूसरे सेलर के बारे में मालूम है। मतलब हर किसी को हर दूसरे के बारे में, हर एक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। कुछ आपको इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है। ये परफेक्ट कंपटीशन का एक और फीचर है। इसलिए कहा गया कि ये एक हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। बाजार में ऐसा होता है क्या? एक सेलर को दूसरे सेलर के बारे में कुछ मालूम रहता है? नहीं रहता, कम रहता, जानने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंडस्ट्री एंड फर्म। लिखिए। under perfect competition, comma, there is a difference between a firm and the industry. There's a difference between a firm and the industry. अंडरलाइन कीजिएगा फर्म को और इंडस्ट्री को, फुल स्टॉप। फर्म की स्पेलिंग FIRM, फर्म एंड द इंडस्ट्री, फुल स्टॉप। Following are two important points of differences. Hyphen देखिए, point number A, a firm is a single producing unit. Comma, whereas an industry is
whereas an industry is a collection of firms, whereas an industry is a collection of firms producing goods of, whereas an industry is a collection of firms producing goods of similar nature. प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ सिमिलर नेचर। देखिए फर्म और इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फर्म जो है एक अकेला प्रोडक्शन यूनिट है, उसको हम लोग कहेंगे फर्म। इंडस्ट्री क्या है? एक जैसे फर्म को जब आप मिला दीजिएगा, जो एक जैसे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जब आप उसको मिलाइएगा तो उसको हम लोग कहेंगे इंडस्ट्री। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि कार, मारुति जो है वो कार बनाती है, तो मारुति अपने आप में क्या होगी? फर्म हो गई। क्यों? क्योंकि एक वो अकेली प्रोड्यूसिंग यूनिट है। अब कार बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं, जब आप सभी फर्म को मिला देंगे तो वो मिलके क्या बनेगा? वो मिलके इंडस्ट्री बन जाएगा। तो फर्म का मतलब क्या हो गया? एक सिंगल प्रोड्यूसिंग यूनिट। और इंडस्ट्री क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ सिमिलर नेचर। पॉइंट नंबर बी लिखना। पॉइंट नंबर बी, एन इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, एन इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, comma, whereas a firm is the price taker, whereas a firm is the price taker। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, पूरे परफेक्ट कंपटीशन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। पॉइंट नंबर बी, इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है, फर्म जो है वो प्राइस टेकर है। अब नीचे में लिखना है स्टार मार्क देके, इंडस्ट्री फिक्सेस द प्राइस, industry fixes the price on the basis of industry demand and supply, on the basis of industry demand and supply। Full stop। Once the price has been fixed by the industry, once the price has been fixed by the industry, comma, the firm will have to accept the price, the firm will have to accept the price। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बाबू। सर सप्लाई के बाद क्या बोले? पूरा सेंटेंस डिमांड एंड सप्लाई, इंडस्ट्री फिक्सेस द प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई। वंस अ प्राइस, फुल स्टॉप के बाद, once the price has been fixed, once the price has been fixed, comma, the industry, sorry, the firm accepts the price, accepts the price, ACCEPTS, accepts the price, and can only decide upon, and can only decide upon, and can only decide upon how much to produce and sell, how much to produce and sell, comma, in order to maximize the profit, in order to maximize the profit, how much to produce and sell in order to maximize the profit, full stop। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, प्राइस यूनिफॉर्मिटी, प्राइस यूनिफॉर्मिटी, ये 5 का ए और बी था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्राइस यूनिफॉर्मिटी, UNIFORMITY, प्राइस यूनिफॉर्मिटी। लिखिएगा इसको, as a firm, as the firms are price takers, as the firms are price takers, comma, the prices of all the prices of all the firms
the prices of all the firms operating under perfect competition is same full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके बाद क्या बोले? is same, SAME is same. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बाबू. नेक्स्ट पॉइंट, no selling cost, no selling cost, no selling cost, ये हाइफन देके लिखो, no selling cost हाइफन देके लिखिए, as there is perfect knowledge, as there is perfect knowledge, comma, no product differentiation, no product differentiation and price uniformity, no product differentiation and price uniformity, comma, price uniformity, comma, there is no need to incur मतलब होना, incur expenses on advertisement, comma, sales promotion, etc. Advertisement, sales promotion, etc. लास्ट में एक पॉइंट लिखिएगा, absence of transportation cost, absence of transportation cost, हाइफन देके लिखना. In this form of market, it is assumed that there are no transportation expenses. It is assumed that there are no transportation expenses. Full stop. क्लास एक काम करना, तुम लोग ये सारे फीचर्स को पढ़ना, मोटा मोटी मैंने समझाया है कुछ को, और अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग. ठीक है क्लास? अटेंडेंस के लिए सारे लोग वेट करेंगे. मैं लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर रहा हूँ. सर ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या बताए थे, एक वर्ड? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट.